Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. We all know that the next examination is round the corner. Any day the notification can come out, and before that we have to ensure that this examination should be your victory examination. And for that, I am always here with all of you to make you excel in your examination, and which I have been doing past 26 years. So these sessions, these MCQs have been helping a lot to students who have been watching, and the next class after the Diwali holidays is once again with you. So my dear students, if you wish to join the classes, pure English batch, bilingual batch, any study material of any examination, UPSC, TGT, PGT, DSSB, and yes, don't forget to join the latest crash course class or the latest crash course book which is in front of you. This will actually make you excellent. And with that, let us start the question number 1 on the screen here. Students, whoever are live here, they may just be communicative with me because the two-way process is always very good in the live classes. Moreover, those who are new to this channel must subscribe the channel, like the channel, and don't forget to press the bell icon. So the question number 1 in your screen: in ancient Greece, lyric poetry was also known as. एंशिएंट ग्रीस में जो पोइट्री, लिरिक पोइट्री है, उसको हम लोग और किस नाम से जानते थे? Was it known as Pindaric, Sapphic, Hellenistic, Melic or Horatian poetry? Now, this is my first question. How many of you can tell me what is the right answer? So कुछ बच्चे लाइव आ गए हैं. राजेश चौबे, गुड मॉर्निंग. एजुकेशनल चैनल, गुड मॉर्निंग. जो एजुकेशनल चैनल है, क्या वो अपना नाम बताएंगे? बच्चों जिनका नाम किसी और चीज़ों से होता है, वो अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें. So, before I get the answer from all of you, let me tell you that ancient Greece में lyric poetry जो थी, that was also known as, lyric poetry was also known as, ये देखिए, in ancient Greece, the lyric poetry was also known as Melic poetry. And my dear students, it is elegy in which the epic hexameter or verse line of 6 metrical feet, of 6 metrical feet. Enjoy the class, students. Have a copy, pen and paper. Alternated with a shorter line were traditionally associated with lamentation. Lamentation मतलब होता है दुख, elegy, and an autos accompaniment. So this is in short that the lyric poetry was also known as Melic poetry. How many of you were knowing this answer? Noor Fatima, good morning Noor, how are you? तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई फेसबुक हो या इंस्टा हो जहां पे आप इस लिंक को शेयर कर सकें, इट इज रियली अ वेरी गुड pious thing to share the link to those students who may feel blessed to have such classes as you have been watching. Now, question number 2, students, आपके सामने. Just 1 second, students. No, second number please. Second number please. Next page. हाँ, ये
करेक्शन करके सिलेक्शन अब ऊपर See, question number 2. Girja Bala, Melic poetry, yes. Ancient Greece, Melic poetry, 6 metrical feet. Yes. Educational channel, बेटा आपने अपना नाम बताया. Yasmina Pathan, Gujarat. Okay, you are Yasmina Pathan. How many students are taking the December examination? Now, the question number 2 है, Pyrrhic meter involves 2 unstressed syllables, 1 stressed syllable and 1 unstressed, 2 stressed, 1 unstressed, 1 stressed, 2 unstressed, 2 stressed and 2 unstressed syllables. देखिए यहाँ पे ये बात समझिएगा कि जो Pyrrhic meter है, it is also known as quantitative meter. ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इट इज अ मीट्रिकल यूनिट. ये है क्या? इट इज अ मीट्रिकल यूनिट. यहां पे लिख सकता हूं, इट इज अ मीट्रिकल यूनिट. यह आपके हमेशा काम आएगा. ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन एक्सेंचुअल सिलेबिक वर्ड्स और 2 शॉर्ट syllables. And this meter is common in classical Greek poetry, but most modern scholars do not use the term, but most modern scholars, because they don't use the term, rather than identify the Pyrrhic as a separate meter, and they prefer to attach the unaccented syllables to adjacent feet. So the right answer is A, that 2 unstressed syllables. इसको आप रट लीजिए. Pyrrhic meter involves 2 unstressed syllables. Fine. Assalamu alaikum, Shabana Hussain. 2B. No, it is 2A, students. It is 2A. Fine. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका. Now, we move to question number 3. जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक बार बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 3. See, question number 3. A classic ode is structured in 3 major parts. कोई भी क्लासिक अगर है, क्लासिक ओड है, तो वो 3 मेजर पार्ट्स में स्ट्रक्चर्ड होता है. द एंटीस्ट्रोफे, द स्ट्रोफे, द इपोड, एंड यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज 5 ऑप्शंस. इनको ध्यान से पढ़िए. गुड मॉर्निंग पविता, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप पविता? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सी, आपको ये पता है कि ओड जो है, that was originated in ancient Greece, and this type of poems were originally performed publicly to celebrate what? To celebrate athletic victories. बाद में क्या हुआ कि this poetic form was favored among English romantic poets. English romantic poets के बारे में आप जानते ही हैं. वहां पे ये पोइटिक फॉर्म बहुत फेवर किया गया. हु यूज्ड ओड्स टू एक्सप्रेस इमोशन. जैसे कीट्स आपने देखा होगा, ही वॉज अ लवर ऑफ ओड्स एंड ही हैज रिटन सच ग्रेट फेमस ओड्स. सो दीज रोमांटिक पोएट्स यूज ओड्स टू एक्सप्रेस द इमोशंस यूजिंग रिच एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. So it is a short lyric poem. It is traditionally divided into 3 sections. अब वो 3 sections कौन से हैं बताना है आपको. राघव, please help me to qualify KSET exam November 24, please. Raghav, just to tell and assure you that Karnataka set
I have a special batch of Karnataka set. I would request my technical person to show the case set thumbnail on my application so that Mr. Raghav may see that the students of South India, especially Karnataka, they are taking the classes. If you have time, you can join the classes and complete, and these classes will help you even qualify the NET examination. If you don't have time, you can take the study material by speed post and complete the books. So, Raghav, the number is written on the screen. You can contact our executive immediately for the case set books or classes. Fine. I am a physically handicapped student, so don't worry, Raghav. We are actually going to help you to make you qualify this KTS exam. Just connect with us on the WhatsApp number given on the screen. Now, yes. Now, it is in 3 sections. Now, what are those 3 sections? पहला है स्ट्रोफे. आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा के सेट राघव. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू रिमूव दिस थंबनेल. नाउ आप देखिएगा सामने ऑप्शंस में आपने क्या बताया. अभी ऑप्शंस आपका आया है 3 मेजर पार्ट्स. 3 मेजर पार्ट्स क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्लासिक ओड. यस, अब देखिए 3 है. पहला है द स्ट्रोफे, और पहली बात तो इसका आंसर आप नोट कर लें. द स्ट्रोफे, द एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड, ये है. ये देखिए, ये है. दिस इज द राइट आंसर, द ऑप्शन नंबर ई. अब मैं आपको इसको क्लैरिफाई करता हूं बिकॉज आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड to teach you with solutions. Raghav, I have completed 3 master degrees, English, Political Science and Economics. You are a bright scholar, Raghav, but if English literature is your cup of tea, then it is a God's blessing that you have got OSN Academy and Sir today. So don't worry, and I will try my best to make you qualify the case set, but don't waste your time. Stay connected on the WhatsApp number given on the screen. The strophe. अब देखिए ये जो स्ट्रोफे है बच्चों, ये इन ग्रीक ओड द स्ट्रोफे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 or more lines repeated as a unit. If I talk about anti-strophe, it is structured the same way as strophe but typically offers a thematic counterbalance. ये होता है anti-strophe. And the epode, ईपोड में क्या होता है, ये जो सेक्शन है, ये जो ईपोड है, दिस सेक्शन और स्टैंजा टिपिकली हैज अ डिस्टिंक्ट मीटर एंड लेंथ फ्रॉम द स्ट्रोफे एंड एंटी स्ट्रोफे एंड सर्व्स टू समराइज, टू कंक्लूड द आइडियाज ऑफ द ओड. ये उसका वर्क है, ये ईपोड का कार्य है. सो द राइट आंसर इज दैट ट्रेडिशनली a lyric poem is divided into 3 sections. पहला स्ट्रोफे, दूसरा एंट्री स्ट्रोफे एंड तीसरा द ईपोड. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. Now we move on to question number 4. Now see, this is question number 4. ये क्या हुआ? क्लीन कर दे. हैं? क्लीन कर. ये क्लीन करा है क्या आपने? नहीं. नंबर कितना था? क्वेश्चन 4. नेक्स्ट वाले. ये हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स.
ode on intimations of immortality from recollections of early childhood is in the form of irregular ode, Pindaric ode, Horatian ode, regular ode, or Sapphic ode. A very simple question, but yes, you have to judge that what would be the right answer. Whatever questions I am putting in front of you, they are one of the most, you can say, jewels for all of you, for any examination. Any options? Raghav. A. A means irregular ode. तो चलिए, A is the wrong answer. इसको कट कर दिया. Now only 4 options are left. See, इसमें से एक ओड है. 4 ऑप्शन जो बचे हैं, इनमें से एक ऑप्शन है which consists of a strophe and antistrophe that is melodious से बना है, melodically harmonious and an epode. मतलब स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और ईपोड. स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और ईपोड, इनमें कौन सा है विच हैज ऑल दिस? आपने लिखा इर्रेगुलर मोड. इर्रेगुलर मोड कहाँ गया? ये रॉन्ग आंसर है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको. राघव ने बोला डी. डी इज रॉन्ग आंसर. अब आपको 3 ऑप्शन बचा है. शिवानी तिवारी ने बोला पिंडारिक. यस, इट इज द राइट आंसर. पिंडारिक इज द राइट आंसर. सो पिंडारिक ओड consists of a strophe, consists of an antistrophe and an epode. Pindaric poems की खासियत ये होती है that they are also characterized by irregular line lengths. Irregular line lengths and rhyme schemes. Ode on intimations of immortality from recollections of early childhood is in the form of Pindaric ode. Imitation Pindaric odes were written in England by Thomas Gray in 1757. The Progress of Poesy and the Bard, Abraham Cowley की Pindaric odes, all they are known as something you can say Pindarics. Shabana Hussain for B, yes, correct. And educational challenge, yes, correct. So the Pindaric ode is the right answer. So my dear students, हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और जिन बच्चों को भी अच्छा लग रहा है एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर, वी आर लविंग द सेशन. उससे आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में अनडाउटेडली एक पुश मिलता है. चलिए हम इसको इरेज करते हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 5th क्वेश्चन. ये 4 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आपके साथ किए, स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा? और हमने आपको बताया है कि हमारा जो PYQ सॉल्व करने का तरीका है दैट इज टोटली डिफरेंट. इट इज टोटली नॉलेज बेस्ड. That is why my classes, my study material, my test series, my crash course all are actually very, very special. Thank you, Pavita. Thank you, Educational Channel. Thank you. And just share the channel and like the channel if you feel like liking it. Yes. आजकल के दिवाली के त्यौहार के बाद आपने देखा होगा बहुत खांसी जुकाम और वायरल हो गया है लोगों को. एंड द सेम थिंग लिटिल बिट हैपेंड टू मी ऑल्सो. बट देन सी, इफ आई हैड प्रॉमिस्ड आई केम हियर विद यू लाइव. थैंक यू राजेश, थैंक यू एवरीबडी. और नूर फातिमा ने लिखा है गियोमो डी लेंटिली, दैट इज द ए ऑप्शन. चलिए देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन of the sonnet? Giacomo di Lentini, Emperor Frederick, Dante Alighieri, Emperor Frederick, and Petrarca.
चलिए देखते हैं, शिवानी तिवारी ने भी लिखा है। देखिए आंसर जितने बच्चे भी दे रहे हैं दैट इज द राइट आंसर, लेकिन केवल आंसर से काम नहीं चलेगा। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन में ये होता है कि ये जो गियाकुमो डा लेंटिली है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज जापो डा लेंटिली। JAOPO da Lentini. How many of you knew this thing? He was also known as this name and he invented sonnet. कितने लोग जानते हैं इसको? How many of you were knowing this thing? He was an Italian poet of the 13th century. ये भी लिख लीजिए. He was an Italian poet of 13th century and he was the senior poet of the Sicilian school. कौन से स्कूल का पोएट था वो? सिसिलियन स्कूल का सीनियर पोएट था। and he was also a notary at the Holy Roman Emperor Frederick II court. एम्परर फेडरिक II कोर्ट का वो एक नोटरी भी था। सो द राइट आंसर इज ए, बट दीज ऑल सोल्यूशन, दीज ऑल एक्स्ट्रा नॉलेज विल हेल्प यू और नॉट, हेल्प यू और नॉट। यस, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। sonnets are usually written in iambic hexameter, iambic trimester, iambic pentameter, iambic tetrameter and iambic heptameter। बताइए बच्चों। शिवानी आयम्बिक पेंटामीटर 6C सभी ने लिखा है। देखिए पहले समझिएगा बात को। सोनेट्स हम सभी जानते हैं कि 14 लाइंस में होता है, 14 लाइंस कंटेनिंग 10 syllables and a fixed pattern of rhyme। 10 syllables and a fixed pattern of rhyme। It was originated in the Italian poetry, we all know, and the main type of sonnet are the Petrarchan, the Shakespearean and the Spenserian, and the word sonnet is derived from the Italian word ये आपको पता ही होगा, सोनेटो वर्ड से निकला है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सोनेटो का मीनिंग होता है अ साउंड। सोनेटो मीन्स अ साउंड। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ लिरिक एंड ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्स। बहुत ही केयरफुली ऑर्डर्ड होता है ये, एंड इट इज बाउंड बाई डेफिनेट रिजिड रूल्स। तो द राइट आंसर yes is iambic pentameter। It is iambic करेक्ट। कोई बच्चों दिक्कत? सोनेटो यस, फाइन। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और बच्चों जो कमिंग एग्जामिनेशन है या जो 2025 का एग्जामिनेशन है जून वाला, उसके लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए प्योर इंग्लिश का बैच और बाइलिंगुअल का बैच, न्यू बैच, बोथ हैज स्टार्टेड 1 वीक बिफोर।
द प्योर इंग्लिश एंड द बाइलिंगुअल। एक बार हम चाहेंगे कि बच्चे उसका थंबनेल देख लें कि व्हाट इट लुक्स व्हेन यू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड से इट। और जो बच्चे दिसंबर का एग्जाम देने जा रहे हैं, डोंट टेक एनी टाइम नाउ from now onwards to complete this book, especially crash course book and the crash course class panel in the application OSN Academy. Fine. Now question number 7, बच्चों को बीच में वो दिखा दीजिएगा क्रैश कोर्स का थंबनेल, और लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये देखिए। In memory of W.B. Yeats is an elegy written by T.S. Eliot, Ezra Pound, George Moore, W.H. Auden and Lady Gregory. बताइए। In memory of W.B. Yeats, question number 7. बच्चों, how many of you have shared my link as I had requested, not for myself but for the other students to enjoy this session? How many of you have shared my link? किसी ने भी अगर लिंक को हमारे शेयर किया हो तो एक बार थम्स अप कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। In memory of W.B. Yeats is an elegy written by W.H. Auden in 1939. ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड करता जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इन 1939, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कितने लाइंस की पोएम थी बच्चों, तो ये लाइंस थी 63। ये देखिए, मोर नॉलेज, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, टू थिंग्स मोर आपको बताया। नाउ दिस 63 लाइन पोएम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये भी पता होना चाहिए आपको। 3 sections is divided into 3 sections. Yes, UGC NET के नए बैचेस राघव शुरू हो गए हैं, प्योर इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। Those who want the complete batch, that can also be taken on the application. In this poem, W.H. Auden, he actually tries to transform the curse of Yeats' physical death into an occasion for rejoining by reminding readers of the paradox of death not being final for a poet. So क्या होता है यहाँ पे? Auden implies that one should not be sad, दुखी नहीं होना चाहिए at Yeats' passing away. And the poet lines for even in and through his poetry. अगर हम W.H. Auden की बात करें, he was an Anglo-American poet who had exerted a major influence on the poetry of the 20th century. Fine. Raghav, okay. चलिए, that sounds great that you are watching the first time. For your knowledge, this is the academy which is known in the entire country past 26 years. So those students who wish to become an IAS officer or assistant professor, or they want to become lecturers in English in different examinations of India, they may subscribe the channel and download the application if they wish to. Okay. सो बच्चों, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को शेयर किया हो, एक बार जरूर थम्स अप करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। Now see,
O Captain, My Captain by Walt Whitman is an elegy. O Captain, My Captain by Walt Whitman is an elegy written for President Thomas Jefferson, President George Washington, President Theodore Roosevelt, President John F. Kennedy, President Abraham Lincoln. Any idea? बताइए बच्चों. नूर फातिमा अब्राहम लिंकन, Shabana Abraham Lincoln. Oh Captain, My Captain by Walt Whitman is an elegy written for the President Abraham Lincoln after his assassination in 1865. 1865 में इसका assassination हुआ था. उसके बाद ये लिखा गया है, Oh Captain, My Captain. And the captain in this poem refers to Abraham Lincoln. And the ship that arrives, जो ship आती है, that is actually representing America. And the first line shows the metaphor of the victory of the Civil War. And the poem is one of the best extended allegorical poems. So this is much in detail about O Captain, My Captain. Fine. So the right answer is President Abraham Lincoln. That is option number E. Yes. Fine. Now, we move on to question number 9. Who among the following is not a Roman satirist? Who among the following, ये देखिए not word लगा है, not a Roman satirist. इनमें से कौन सा रोमन सैटारिस्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट वर्ड लिखा है, नॉट. कौन नहीं है? क्विंटिलियन, हॉरेस, जुवेनल, एरिस्टोफेन्स, पर्सियस. बताइए. एनी ऑप्शंस? Who among the following वो रोमन सैटिरिस्ट नहीं है? रोहित सूथर, ऑप्शन 9D दिया है, एरिस्टोफेन्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर DSSB PGT लिटरेचर. Rohit, we have the DSSB, PGT, TGT, all books, all classes. Innumerable students are studying in the application for everything. So on the written number on the screen, you can contact for the books or for the classes. Shivani Tiwari, Quintilian, and Educational Channel 9D. No, Quintilian is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong, and the right answer is Aristophanes. Aristophanes, often referred to as the father of comedy, curate the world's earliest surviving comic dramas. He was a comic playwright of ancient Athens and a poet of old Attic comedy. He is also known as the Prince of Ancient Comedy. The Prince of Ancient Comedy. इसको नोट कर लीजिए. Who is known as the Prince of Ancient Comedy? आप बताएंगे Aristophanes. Correct? So now we go to next question. छोटा है. Question number 10.
In which year did the Archbishop of Canterbury, John Whitgift, and the Bishop of London, Richard Bancroft, issue a degree banning word satire? किस साल में जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ये हैं और इन्होंने एक इशू किया अ डिग्री बैनिंग कि वर्ड सटायर हम बैन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10. एनी आइडिया? क्वेश्चन नंबर 10 आपने लिखा है ए, और coincidentally A is the right answer. In 1599, the Archbishop of Canterbury, John Whitgift, and the Bishop of London, जिसका नाम है रिचर्ड बैनक्रॉफ्ट, इन्होंने इशू किया था डिक्री बैनिंग द वर्ड्स सटायर. फाइन. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा. अब घड़ी ये बता रही है थोड़ा सा आज डिले हो गया, और थोड़ा सा आप भी स्पीड में अगर हमें आंसर बताएं तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल ट्राई टू टेक मोर क्वेश्चंस. अब हमारी थोड़ी देर में एक आईएएस की क्लास है इन माय एप्लीकेशन, सो माय स्टूडेंट्स मस्ट बी वेटिंग फॉर माय क्लासेस ऑफ आईएएस. सो मीट यू अगेन. सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार हम अपने बच्चों को फिर से दिखाना चाहेंगे द एप्लीकेशन एंड द न्यू बैचेस एंड द कंटेंट, एंड स्पेशली दिस स्पेशल क्रैश कोर्स बुक विच एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुड हैव. शबाना हुसैन जी कहती है आई एम अ टीजीटी स्टूडेंट बट मोस्टली क्वेश्चंस आर राइट. चूँकि आप थोड़ा सा और अच्छी स्कॉलर हैं, और अगर आप टीजीटी स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहती हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, तो शबाना जी एक बार आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा. एक बार कंटेंट और क्लास टीजीटी की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे टीजीटी पीजीटी पिछले एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके दे आर ऑल पोस्टेड. फाइन, करेक्ट. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए एक स्पेशल बुक है विच इज़ नोन एज Rhetoric and Prosody and Literary Terms. See this. So this is a very, very special book for every student which has been launched. And it is a very, very compiled book, very bound. So this is a world of literature. You can crave for anything, you will get everything. Shabana, I am joining your classes per day. Shabana, I am not talking about the YouTube classes. I am talking about the app classes where you are going to study in proper way the syllabus exactly of your knowledge, of your level for which you are going to face the competition. Sir, your books are useful for GSET. Yes, for any examination in India you have the books, and for GSET many students are studying in the GSET batch. They have also got the study material in the hard copy. So whatever you wish, you can have it. You have to just note down the number on the screen and WhatsApp us to our executive. Thank you so much, students. Have a great day.